Okay, so let's start. तो आमे आज केतुड़े तो करंट रिलेटेड टॉपिक आमे डिस्कशन करिबा रिलेटेड टू ओडिशा रिलेटेड जो करंट अफेयर्स. सो ता पूर्व केतुड़े आमर जोड़ा लास्ट ईयर क्वेश्चन पचरा जाइथिला. ओके, तो पिला मानकु जो जो क्वेश्चन पचरा जाइथिला तो तापरे मो पाखे किसी भी मटेरियल नहीं किंतु आमे जनरल आज माने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हिसाब रे आमे डिस्कशन करिबा जे यही क्वेश्चन जोड़ाक रिलेभेंट फॉर माने वर्तमान समय जोड़ा रिलेभेंट तो से उपरे हमर डेफिनेटली क्वेश्चन पचारिबा कोन आमे कहिबा. तो एटा मु कहिबि जे जहाँ भी हमर आउटपुट बाहरिबो एई डिस्कशन रो ही बाहरिबो. तो ता उपरे आमे डिस्कशन करिबा. तो फास्ट कथा होची जे डिजास्टर मैनेजमेंट. तो जो ठीक पाई कि हमर ऑलरेडी ओडिशा ऑलरेडी माने अवार्ड भी मिली हमर यूनाइटेड नेशन रु डिजास्टर मैनेजमेंट पाई. तो डिजास्टर मैनेजमेंट रे हमर केमिति डिजास्टर मैनेजमेंट को हमर गोटे बेटर वे रे कोऑर्डिनेशन रे हेई परचिन ओडिशा गवर्नमेंट रे. तो ता ऊपर हमर तो कौन कौन पॉइंट्स रहिबो तो ता ऊपर हम निहाती कारण वर्तमान सिचुएशन हमर जेंति फ्लड इशू फ्लड हमर सिचुएशन हेइछ हमर बालेश्वर जी डीएम अछन तांको एसआरसी पावर भी दिया जाइछि. तो डेफिनेटली फ्लड को केमिति हमें कंट्रोल करिबा रिलेटेड टू आउ फ्लड सिचुएशन रे हमें केमिति कौन कौन स्टेप्स नबा तो ता ऊपर हमर फ्यू पॉइंट्स हमें डिस्कशन करिबा. Then we'll go to the next topic. So related to flood management and disaster management. First, particularly in this flood situation, what are the controls we need to follow and how can we can better manage करि परिबा flood situation को. Yes. तो एटा ओपन डिस्कशन समस्त को ओपन मु माने करंट अफेयर्स डिस्कशन करी आगु दी तीन टॉपिक आम जोटा कि जनरल पचारे जेहेतु फ्लड सिचुएशन आ परीक्षा सॉरी इंटरव्यू मे भी 10 days पर होची तो सही समय आउ एटा तो गोटे डेफिनेटली क्वेश्चन गोटे आसीबो कि फ्लड सिचुएशन को केमती कंट्रोल करा जिवो कि डिजास्टर. ओके, तो फास्ट फ्लड सिचुएशन को केमती आमे करबा कोन कोन स्टेप्स नबा गोटे जनरल डिस्कशन एमती नाही कि आपे किछि गोटे थ्योरी कोड पढिबार अछि तो कोन कोन निया. Yes. Okay, कुह आलोक एनी पॉइंट्स अच्छी तुम पाखे मॉक टेस्ट नहीं. हाँ विक्रम कुह विक्रम. First Vikram को तापरे जयश्री. हाँ Vikram. Hello sir, am I audible? हाँ yes Vikram you are audible. Good evening sir. So as far as this flood or any disaster management in general is concerned, there has been a shift after the Yokohama conference and the Sendai framework that focuses on not only the response and reactive part but also the proactive part. That includes the importance of mitigation, that we have to plan in advance before any disaster hits us. So as far as the flood is concerned, we have to be prepared. We have to have the concept of ring roads around the cities and the village area as much as possible to control the regular flood. One second. So that damage can be reduced. So apart from this preparedness on the areas of response etc, more shelter and the concept of 3R should be promoted. So we can talk on those areas. Okay. Sorry. Yeah, very good. Jayasri. Sir, during flood, zero casualty remains our main goal, so that people who are affected, they could be protected. So for that, the district administration first of all gave them protection shelters are made so that they will be transferred to the safe area. And early warning system has been also has been provided by the system, so that the people who are living in the low embankment area of this rivers will be less affected.
the disaster management team also provide the necessity material for the for their need. Sir, and recently there was a news that the Kendrapada district administrator has launched a program. I think Nari something. They have launched sanitary napkins dispatched to they are giving this pack to the women who are marooned during this flood time. Okay, very good, These are Jayashree. the Yeah. Tanuja, any other point? Sir, first one is early warning and awareness should be generated. The next thing is timely evacuation of animals and peoples to flood shelter homes. Okay. And the third one is effective distribution of dry food materials and clean drinking water so as to avoid diarrhea and other communicable diseases. Okay. Very good. Sambit? Yes, sir. Good evening, sir. Yeah, good evening, Sambit. Go. Yes, sir. Sir, at the present level, the disaster management program of Odisha government is primarily focused on uh, zero casualty. That is the minimizing the loss of life and etc. But what is happening is during a disaster, we are having huge amount of economic loss. Like roads are being washed, infrastructure are being damaged, electricity pole or electricity connectivity are getting damaged. So at the present level, apart from all the initiatives or program that is going on, we have to focus on permanent infrastructures like Pakka roads or underground electricity wires. This kind of permanent infrastructure can increase the can minimize the loss during the disaster, and it will also help during the evacuation process or during the flood management, any kind of disaster process, which will help the government or the officials those are working on in those areas. They will be get benefit. Okay, very good. Himadri? Thank you. So, for containing any kind of disaster, including flood, there are three basic steps. First one is before the disaster, then second one is steps taken during disaster, and third one is the steps taken post disaster. So, before the disaster, we can include structural measures like building dam, flood levees, sluice gate, and mainly, we need to focus on encroachment of flood basins, Okay. which is the major reason for flood. Like the growing urbanism is causing more and more encroachment in the flood basins. Okay. And hazard mapping, we can do flood hazard mapping and installing early warning system. Then risk assessment should be done in flood, majorly in flood basins. Okay. Then during disaster, more focus would be on evacuation, deploying the ODRAF and NDRF team. Funds should be allocated for capacity building. Then rescue operations should be done. And post disaster, the supply of basic needs should be taken care of. Rehabilitation measures. Then another thing is cooperation among states. Like this year, the growing conflict between the states regarding the Mahanadi water dispute. Such cooperation should be taken while we are channeling the water through the dams. Okay. Then we need to we can use take care of uses of technology such as UAV, GIS for damage assessment. Okay. Okay. Yeah, very good, Himadri. I think you cover many points. Okay. तो जो way you have told कि pre-disaster and during disaster and post-disaster, and you have classified each and everything. What are the steps? Very good. Okay. Vivechana, any other point you want to make? And particularly urban flooding आमर जो जमती कि भुवनेश्वर की आम देखुचे ड्यू लास्ट ईयर आम पचरा जाइए कि भुवनेश्वर आमर अर्बन फ्लडिंग हो लास्ट ईयर जड़े चाइल्ड भी आमर कौन ना
ये जो फ्लडिंग रे माने ड्रेन भितर को पड़े तो अर्बन फ्लडिंग जो होची सो हाउ यू कैन मैनेज अर्बन फ्लडिंग yes विवेचना or anyone want to make because एटा हमर बे हॉट न्यूज रे अछि and related to flood हमें आप रे महानदी इशू भी डिस्कशन करिबा काहे कि ना महानदी जो इशू वन ऑफ द हमें जो डिस्प्यूट बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा तो सेटा हमें केमती गोटे हमें आप गोटे प्रॉपर जो फ्रेमवर्क हे परिबो कि केमती फ्लड कंट्रोल रे हमें जो ताकू मैनेजमेंट रे एटा हमर गोटे प्रॉपर सॉल्यूशन कढा जाई परिबो तो तापरे भी हमें डिस्कशन करबा यस तो अर्बन फ्लडिंग ऊपर हमर काहर के जी पॉइंट्स रहइबो Sir, हाँ टिके common idea अछि कि unlike the popular belief, urban flooding is not a natural disaster. Actually, it is a man-made disaster, okay and actually, it is the failure of town planning system that normally leads to the urban floodings. That's why a proper town planning should be needed to avoid Chennai and Bhubaneswar like urban flooding. okay And apart from that, a proper manhole system be prepared because in flood roads, if there is open manhole, lot of deaths are the reason because of them. So, and a proper drainage system, we can follow the concept of New York City drainage authority, where that emergency system automatically operates in case of heavy flooding area. So that system, by thinking long-term goal in my mind, we can create that kind of capacity building or infrastructure preparation in advance. okay yeah Tanuja Sir, there should be a restriction on illegal construction and focus on urban planning, just like our Harappa civilization. Some section of homes or urbanization was in a planned manner. Means some people are staying in upper or some portion of the urban are sector-wise divided, like in upper land and lower land. Similarly, we can properly plan the drainage and sewage system. And the other one is proper waste management, which obstructs the drainage for which the artificial flood is created, generally in urban areas. ओके वेरी गुड जो प्रॉपर प्लानिंग कहलेनी कि हमर ये तो आ ऊपर हमरा जेंते ट्विन टायर को जो डिमोलिश करा गला आ ऊपर गोटे पर्टिकुलर क्वेश्चन तुमको पचरा जिवो एथर जे केमिति हमर प्रॉपर तांको कि हमर ऑलरेडी परमिशन केमिति मिलला एते बड़ स्ट्रक्चर को हमर डिमोलिश करा गला कोठी भूल थिला कोन थिला ता ऊपर तो करप्शन एंगल हो एडमिनिस्ट्रेशन एंगल हो डेफिनेटली एटा गोटे गुड हमर केस स्टडीज और डेफिनेटली तापरे हमें डिस्कशन करवा लेट रिसर्च तापरे मे बी गोटे दिन आम डिटेल ले करवा कारण एटा गोटे सिविल सर्विस इंटरव्यू पे गोटे क्लासिक एग्जांपल हो जाउची तो कारण एथरे बहुत माने जो माने कि स्टेक होल्डर इन्वॉल्व अछंती तो कोडी भूल रहला गोटे 300 करोड़ रो गोटे हमें ऑलमोस्ट 300 करोड़ पाखापाखि गोटे हमर ये को डिमोलिश करा गला तो तापे हम गोटे प्रॉपर डिस्कशन करवा नॉट इन दिस क्लास मे बी डेफिनेटली टुमोरो और डे आफ्टर टुमोरो डेफिनेटली आप हमें डिस्कशन करवा सो आफ्टर हमें प्रॉपर रिसर्च करके किसी पॉइंट्स हमें हासिल कला पड़े ओके यस तो आउ हाँ संबित एनी अदर पॉइंट आउ कहया चाहतलो जो Yes, sir. Urban flooding रो सर main cause किछटा रोजी जेंते सर एक तो illegal encroachment रोजी and the biggest problem is the lack of coordination between the different departments of the government. Like due to their improper coordination, the projects are being delayed and the roads are being constructed over the entire years. So lack means so better coordination ही यार गोटे major solution नहीं परिबो between that. ओके हिमाद्री सर आउ गोटे पॉइंट बस कहबे सेटा हला रिस्टोरेशन ऑफ लेक्स अराउंड urban areas ओके as lakes can store excess water so they regulate in the flow of water ओके and then आउ गोटे हला population control ओके ठीक अछि विवेचना सर आउ गोटे पॉइंट कि हमें मियावाकी मेथड यूज करिकि ना लो लाइंग एरियाज रे नेचुरल वेजिटेशन हमें इंप्रूव करि परिबा सो दैट विल क्रिएट अ नेचुरल कुशन फॉर द फ्लड वाटर बिफोर कमिंग टू द अर्बन एरिया ओके Sir, rainwater harvesting can also be a solution.
in urban areas. Government of Odisha rain water harvesting ପାଇଁ ଗୋଟେ scheme ଆଣିଛି ଆମେ ପଢିବା ଏବେ scheme ଗୁଡାକ okay so coming to the next topic like Mahanadi issue definitely ଯେହେତୁ flood situation ଆଉ ଆମର urban flooding ହେଲା କି flood ku management କେମିତି କରାଯିବ okay and Mahanadi issue so what are the major actually why this what are the mane background behind this Mahanadi issue and how we can actually resolve this Mahanadi issue so ता पर हम ଟିକେ discussion करेंगे yes हुआ हिमाद्री किसी आइडिया अच्छे महानदी इश्यू पर महानदी वाटर डिस्प्यूट पर यस विवेचना को Sir, mainly because more of the embankments जो create ही जाउची distributaries उपरे और महानदी रे जो siltation increase होची जोटा को clear करा होनी सेति पे धीरे धीरे flood situation increase होची महानदी रे and that too छत्तीसगढ़ रे भी dam अच्छी and the dam is also in Bhubaneswar Sambalpur so as they are opening the gate in Chhattisgarh so the water is rushing to the low-lying area that is in Sambalpur and people are not able to control the water in the gate. Okay. So Setipe they have to open the gate and that's why the flood situation is arising in the nearby areas. Okay. So any other point? तो आरा solution हाँ समित को Sir, the dispute between Odisha and Chhattisgarh over the Mahanadi river is due to Chhattisgarh is building number of barrages and dams over Mahanadi, and it is storing or restricting the flow of water that should be come to Odisha. And due to this, during the Kharif season in Odisha specifically, the farmers are adversely affected. And the agriculture was adversely affected. And during the rain, what happened due to excess storage of water in Chhattisgarh, they suddenly opened all the gates and flood happened in both in Odisha and Chhattisgarh. Okay. So the dispute between Odisha and Chhattisgarh is in the tribunal for many years. And in India, the river dispute problem is it is according to Article 263, I think, that is tribunal method solution so that is a very long process. And naturally what is happening is due to this conflict between the states, the dispute is not being resolved and this process is going on. So the need of the hour is to bring in some different kind of solution that apart instead of tribunals, okay, which can resolve these issues quickly. Okay. So states should interfere in this process, and both the states should get into this. Thank you. Very good. So our Mahanadi issue by you can actually both side maybe drought like situation hoji due to insufficient of water. Because we are telling that Mahanadi is the lifeline of Odisha and many of our agriculture or other activities, drinking water or agriculture, everything is depend upon the water of the Mahanadi. So if they are illegally constructing the dams and barrages in the upper courts, definitely there is a shortage of water in Odisha. So it will be hamper our economy because of the agriculture. And also it will create problem for the drinking water. So that is one problem. And during like this situation, as they are actually when heavy rain is happening due to the erratic rainfall or the monsoon due to climate change or whatever maybe, whenever, so they are releasing the water when we need the water, they are not releasing. When we don't need that time, they are releasing, because definitely otherwise
it cannot be controlling their side. When they are releasing, definitely where it is creating flood like situation in the lower bed. So for that, definitely Mahanadi water Mahanadi issue, a tribunal like Kaveri water tribunal is there, but it is a long process. Definitely it will be long process, and definitely the discussion and debate should be done in a peaceful manner between the two government to find a proper solution for this Mahanadi. So to like to increase the हमारा जो सॉल्यूशन प्रोसेस को हमारा स्पीड अप करिया ପାଇଁ सॉल्व करिया ପାଇଁ हमारा डेफिनेटली एथिरे हमारा जो गवर्नमेंट लेवल हमारा स्टेट लेवल गवर्नमेंट लेवल हमारा एटा को डिस्कशन और डिबेट करके सॉल्व करिया था तो आमे आसीबा आ ऊपर महानदी ऊपर आमे डिटेल कारण एटा गोटे टॉपिक जोटा कि सब बेले पचरा जाउची महानदी को नहीं कि तो आप में डिटेल डिस्कशन करिया पर ओके सो जस्ट आमे जो जोडा को वर्तमान सिचुएशन सेटा ऊपर हां विक्रांत को Sir, I assume it can be a valid point or not, but as we have already been saying that there has been a lot of tribunals, but the last tribunal on Mahanadi Chhattisgarh failed to submit its report of 2016 deadlines. So that tribunal idea, if not working, we can follow the idea of autonomous body, independent body on the line of constitutional body. That those should be the deciding apex body for dam creation, etc. And states should not be the main crucial player, so that can solve that interstate problem. Okay. Yeah, Samrit, go. Sir, in this issue, apart from the economic and the political issue what is happening behind this, we can see these issues as environmental issues also. So, environmentally, like due to illegal or over excess building of dams, the natural flow of the river is getting hampered, and it is also adversely affecting the biodiversity of the water biodiversity. So, in that aspect also, we should think in these issues. Okay. Jayashree? Sir, recently the center has also put forward the idea of a permanent tribunal to educate all interstate river water dispute for a speedy resolution, sir. Yeah, very good. एटा गोटे गुड पॉइंट तुम कहि परिबो कि जेमति कि हम गोटे एंड इंडस वाटर ट्रीटी पय हमर गोटे परमानेंट कमिशन अछि तो सिमिलरली गोटे परमानेंट कमिशन रहबा दरकार जे कि हमर कोन हो ना जतक हमर हो कावेरी हो किबा हमर महानदी हो कि जो वाटर डिस्प्यूट गुडा को होछि सेटा हमर करि परिबा ओके फ्लड लाइक सिचुएशन यू कैन टेल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कले एनी बेनिफिट कि हमर फ्लड लाइक सिचुएशन को कंट्रोल करिया पई सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टिल हमर सम ऑलरेडी कैन बेतवा जेमति इंटरलिंकिंग रिवर होची तो डेफिनेटली इज इट गोइंग टू हेल्प द फ्लड मैनेजमेंट तो Sir, it will affect the natural flow of the river, and it will also affect the biodiversity, especially the forest and other animals who are present in that area. तो कौन भाई एते पैसा ताली खर्च होची इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर भाई यदि एते ये होची तो काई पुनी हमर एते खर्च करचे इंटरलिंकिंग ऑफ पॉजिटिव कोन है पॉजिटिव साइड रे मते को जे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो कोन कोन हमर पॉजिटिव बेनिफिट होची यस जयश्री को So the Cane Betwa linking project is basically they are linking the river and rivers, which main aim is to transfer the surplus water from the Cane region, which to the in MP, which is in MP, to the region which is deficient in or dot area in the local region. So basically they were transferring water from a surplus region to a less water region. So this the drawn area will get benefited from this by to their farmers, and it will also provide irrigation facilities to them, and it will improve the natural resources and forest and whole over the ecosystem of that region. Drinking water also. So yes sir, drinking water definitely. Also you can tell, okay. Yes sir. Okay. So let's start with the topic जोटा कि हमें डिस्कशन करिया थला तो केते गोटे मु खाली जोड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक मु ऑलरेडी हमर जो टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर करछि जो माने
टेलीग्राम ग्रुप रे अच्छी सो आम से स्टार्ट करिया ओके एंड पर्टिकुलाली ये जो एबे हमर गोटे नुआ डैम क्रिएट कराई कोटी डैमटा है और तमे जहाँ भी कह माने कौटी मयूरभंज गोटे आमर है देव डैम वेरी गुड देवी ओके को रिवर रे ओके आउ कौन ए बेनिफिट कौन So that is constructed over the Dev river. हाँ ओके जे कौन बेनिफिट तार माने किसी बेनिफिट तो माने कौन कौन एटा हमर फैसिलिटी जो कौन कौन बेनिफिट है से एरिया रे केते एरिया को हिचे कौन हिचे ता ऊपर किसी आईडिया अछि का ऑलरेडी सब गुड़ाक माने जो जो स्कीम गुड़ाक माने लास्ट 1 ईयर भितर है जहाँ जहाँ इम्पोर्टाट से गुड़ाक ऑलरेडी ये ग्रुप रे शेयर करी ओके सर ये पीडीएफ टा ग्रुप रे शेयर करचंती कि जोटा शो करचंती सेटा ऑलरेडी ये लिंक्स गुड़ाक मु शेयर कर दे जो ओके I think it. तो डेफिनेटली माने जो सीएमओ ओडिशा जो हमर जहाँ भी लास्ट 1 ईयर है से साइट को जीव ट्विटर अकाउंट जदि नाही गोटे खोल ओके एंड डेफिनेटली एटा गोटे आमर जोटा कि सब बेले जहाँ जहाँ इम्पोर्टाट आमर स्कीम होती से एरिया रे तो डेफिनेटली एटा गोटे रोचे तो एबे आमर सुवर्णरेखा आउ देव जलसेचन जो ऑलरेडी आमर इनागुरेशन होती 2.5 लाख रु अधिक चाषी आमर बेनिफिट रहिबे एथिरे ओके तापर गोटे वीडियो भी थिला एटा ही ओके तो ता ऊपर आम डिटेल रे तापर कोन ना टिके देखिबा ओके तो एटा को डिस्ट्रिक्ट रे आसुची हमर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे आसुची ओके तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे एटा आसुची तो ता ऊपर हमर कोन ना को रिभर दीटा मन रखी था गोटे देव रिभर आ गोटे हमर सुवर्णरेखा तो एटा गोटे हमर आसुची ओके सर काइंडली सेटा टिके शेयर कर दे हमें मैं भी लेट रे बदे जॉइन कर छु कोन से देखा होनी हमको से जो डॉक्यूमेंट आपन देखो थी अच्छा मैं एथिरे डायरेक्टली एथिरे तुम करि परबो एथिरे ओके माने मो कह कथा होचे जे एथिरे डायरेक्टली आपन जाई कि एई हमर सीएमओ जो तांका ट्विटर रे जोडा हमर अछि तो जहाँ भी इम्पोर्टेंट स्कीम हे छै आगे सीएमओ ओडिशा हां सीएमओ ओडिशा तो सेथिरे सब गुडा का अछि तो जोडा का हमें जो इम्पोर्टाट जोड़ा कही जमती कि गोटे देव है एवं आम बुर्ला यूनिवर्सिटी बुर्ला को आम कौन कर दिया 5T रे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भीसुट टाको 1000 करोड़ ग्रांट है करोड़ दिया जाउची ओके तो हां आ गोटे हला हमर ए देव पूर्व आम जस्ट हमर ओडिसा रो मिलेट मिशन हमर 2023 को हमर कौन कहजना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हिसाब से आम नि ओडिशा गवर्नमेंट गोटे पर्टिकुलाली मिलेट मिशन करी गोटे इनागुरेशन स्टार्ट करी जो थे कि तो जो मोर आम ट्राइबल एरिया रहिला तो किंबा आमर अदर जो माने कि एग्रीकल्चर एरिया रे आमर कोन एग्रीकल्चर जो जो रूरल बेल्ट रे आमर कोन ना मोर फोकस करा होची केमिति आमर मिलेट को तार प्रोडक्शन आमर बढ़िया पे ओके
बजेट रे भी पर्टिकुलरली बजेट रे हमरो आ पई पर्टिकुलरली फंड्स भी प्रोवाइड कराई तो ओडिशा मिलेट मिशन टू बूस्टिंग फार्मर इनकम वुमेन मानक आमर कौन करने ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने तो यहाँ आम मिलेट मिशन है ओके तो यहाँ गोटे इम्पोर्टाट जोड़ा इम्पोर्टाट आम विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना यहाँ तो निहाती आम समस्ते जाचे विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना आम कौन हो टोटाल 5 लाख दिए 5 लाख दिया जाऊँगी वुमेन हेल्ले 7 लाख राज्य बाहर भी 13,000 अधिक लोक स्वास्थ्य सेवा ओके तो जो जोड़ा इम्पोर्टाट माने हमरो पूरा 1 ईयर भितर ओडिशा गवर्नमेंट रो जो जोड़ा इम्पोर्टाट इनिशिएटिव हम कोठी कहि परबे जे हेल्थ सेक्टर अकाउंट ना विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे हमरो लोक मानन को मेडिकल फैसिलिटीज दिया जाउची फॉर हमरो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो प्राइवेट बॉडीज भितर हो तो सा पे हमरो दिया जाउची ओके तो ओडिशा रो छात्र तो यहाँ भी गोटे आम योजना जो थी कि कौन करा जिन करा ना फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो टू इंक्रीजिंग द ग्राउंड वाटर लेवल तो ओडिशा कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अंडर छात्र स्कीम तो छात्र स्कीम रे हमर कौन करा ना फॉर कंजर्वेशन ऑफ द रेन वाटर पर्टिकुलरली हमर से जो वाटर को कलेक्शन करी रखिया एटा हमर छात उपरे इंस्टॉल करा जाउची आ सेहि थ्रू हमर कोन हो ना ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके हमर डेफिनेटली हमर वाटर लेवल ग्राउंड वाटर लेवल को हमें बढ़ाई परिबा तो छात योजना गोटे मन रखता तो आ पई 29,500 ओके प्राइवेट बिल्डिंग आउ 1,925 गवर्नमेंट बिल्डिंग विल कवर अंडर दिस स्कीम तो आउटले आ पई 270 करोड़ रो ओके बजेट भी आ पई रखा जायछि ओके तो से मु ऑलरेडी से ग्रुप रे जो जोड़ा इम्पोर्टाट स्कीम ओडिशा गवर्नमेंट रो बर्तमान चली तो ट्विटर अकाउंट को जाइए सीएमओ ओडिशा रो जोड़ा इम्पोर्टाट से गुड़ाक तुम मन रख सब गुड़ाक नुहे जो पर्टिकुलरली आमर कौन ना जोड़ाक जमीक विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना ये जोड़ा रहा देव आमर जो इरिगेशन प्रोग्राम ओके तो यहाँ आमर मन रख हाँ मिनरल एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन आमर होइए भी टिके देखिबो particularly mineral ro to enhance the transparency in mineral administration au ensure effective monitoring of the mining operation pai odisha government gote amaro scheme anithila I3MS scheme for 5 aguru anithila eta ko 5 more year taku extend kara jaichi to eta end to end online monitoring system to jota ki will move up 330 crore user fee in the next phase of the extension तो डेफिनेटली आउे डिटेल आमर I3MS जोटा कि ऑनलाइन पोर्टाल जो नेशन वाइड आमर बेस्ट प्रैक्टिस इन द IT इन्वेंशन बोली आमर एटा कहउछि तो रिलेटेड टू माइनिंग को नहीं कि आमर जो तार माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं कि तार इफेक्टिव केमती मॉनिटर करा जिवो कि एफिशिएंसी केमती बढ़ा जिवो तो सेहिति पई एटा I3MS जो ऑनलाइन पोर्टाल ता आमर मॉनिटरिंग सिस्टम ता आमर इंप्लीमेंट करा जायछि okay so any idea any one have any idea related to this sorry एटा केतेळो डिस्कनेक्ट हे गलानी ମୁଁ ଭାବିଲି ପଢ଼େଇ ଦେଲି କେତେବେଳକୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଲାଣି ଦେବି
सर 5-7 मिनट लीजिए सर 5 minutes आज्ञा सर किसी शुभ नथला एक्चुअली आपन वॉइस अच्छा नहीं डिस्कनेक्ट हो जाइतला एटा कोन हमर प्रॉब्लम आज्ञा आज्ञा 5 ରୁ हाँ 7 पाखा minutes 5 minutes 5 मिनिट्स पाखा सर आज्ञा ओके सो सॉरी एक्चुअली मु माने आ गोटे विंडो रे डिस्कशन करि चली जे मु एबे देखला बेलु काई रिप्लाई आसुनी सर मिलेट मिशन चलेतला जो स्टार्टिंग करथले सेते डिस्कनेक्ट ओके 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 ठीक अछि मु देखि दउ छै तो नहीं आमे मिलेट मिशन पर ओके तो आमे आ गोटे डिस्कशन करूथिले कि छात्र योजना गोटे ओके छात्र योजना रे कोन होची एनीवन नो कि छात्र योजना रे कोन होची सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हाँ वेरी गुड तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमर छात्र योजना होची एटा मु जस्ट देखौतली कि छात्र योजना हमर गोटे आसी जो थरे कि हमर छात उपरे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पई हमर से जो ये रखा जीवो कोन ना कंस्ट्रक्शन करा जीवो बॉक्स रखा जीवो जेंति हमें कहूचे वाटर स्टोरेज हमर जो प्लास्टिक बॉटल जो रखा जाउची ओके तो सेही थ्रू रे हमें कोन करा जीवो ना वाटर टा स्टोर करके हमर हार्वेस्टिंग करा जीवो ओके तो एटा गोटे छात्र योजना आसी छी ओके देखौतली एटा मिलेट मिशन कहितले तापरे हाँ तापरे छात्र योजना आउ तापरे बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे हमर कहिले कि हमर वर्तमान वन ऑफ द हमें कहबा जे मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रा हमर बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना जेमति हमें ऑलरेडी डिस्कशन करिथिले कि हमर पर फैमिली तो 5 लाख वुमेन मानक पई 7 लाख हमर फ्री मेडिकल हमर जो इंश्योरेंस कवर करा जाउचे इथिरे ओके अंटिल नाउ अराउंड हमर 3 लाख रु 3.81 लाख रु अधिक लोक ऑलरेडी एथ्रू माने ट्रीटमेंट है कि सक्सेसफुल बाहर चलानी ओके हाँ आ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट थिंग हूँ जे आमर I3MS कौन एटा ना एटा गोटे ऑनलाइन पोर्टाल एंड टू एंड ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम जो थी कि आमर जो मिनरल जो रीजन रे रहला मिनरल एडमिनिस्ट्रेशन आउ इफेक्टिव मॉनिटरिंग करिया पई माइनिंग ऑपरेशन रे तो I3MS जो सॉफ्टवेयर टा आमर और द ऑनलाइन पोर्टाल टा जोटा कि आमर वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस इन द IT इन्वेंशन एटा आमर करा जायछि तो ओडिसा रे जो जेहेतु आम कह आमर वन ऑफ द मिनरल बेल्ट आमर इंडिया रे आम कहूचे ओडिशा को एंड लॉट ऑफ मिनरल लाइक आमर मैंगानीज हो ये आमर टॉप प्रोड्यूसर इन द कंट्री तो डेफिनेटली तार इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आउ मॉनिटरिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड फॉर दैट दिस I3MS सिस्टम जोटा आगु इम्प्लीमेंट थिला गोटे ऑनलाइन सिस्टम सेटा को 5 इयर्स पई एक्सटेंडेड करा जायछि जदि आम पचरा जीव जे आमर मिनरल रे कोन कोन आमर मिनरल रो हैंडलिंग रे कौन कौन प्रॉब्लम होउची कि तापई कौन कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो स्टेप्स अच्छी तो गोटे एग्जांपल आम कहि परिबा कि I3MS जो सिस्टम रे हमर ऑनलाइन मॉनिटरिंग आउ तार एडमिनिस्ट्रेशन करा जाउची सो दैट कि एटा हमर इफेक्टिव वे रे हे परिबो सर गोटे क्वेश्चन पचारिबे जदि समाने ओडिसा रे एते इन्वेस्टर मीटिंग आ मेक इन इंडिया हबा सत्ते भी किछि इंडस्ट्री रे फ्लोरिश हे परने काहे कि बोले जदि पचारिबे नहीं डेफिनेटली हेडा हां हेडा कहबा ओके सो लेट्स डिस्कस एटा कि वन ऑफ द क्वेश्चन हो जे हमें कहूचे वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर इन द मिनरल ओडिशा इज द टॉप प्रोड्यूसर इन मिनरल इन द कंट्री स्टिल व्हाई द industry or the manufacturing sector related to the mineral is not flourish in Odisha. What are the challenges and what are the like the solution we can think for this problem?
कौन हो पार यहाँ भी आम बहुत थर पचार कि आमर ओडिशा तो एत आम कहे गोटे लीडिंग कंट्री स्टिल कहीं आम एत बैक रोचे मैन्युफैक्चरिंग को लेकिन कि रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आमर ओडिशा कहीं रोनी यस तापर कौन कहवा को हुआ कौन कौन चैलेंजेस रोचे कहीं ना आमर मैन पावर इश्यू रोचे ना आमर कहीं आमर ये आमर एत मैन्युफैक्चरिंग लैंड एक्विजिशन इश्यू रोचे ओके लैंड एक्विजिशन इश्यू रोचे आ कौन सर हमरो 20 लाख रो अधिका लोक जाउतनी बाहर माने अन्य इंडस्ट्री काम करया को सूरत ये सब अन्य जाउ किंतु ओडिसा रे तो से माने भी माने ये पारंते ना ऑब्जर्व हे करंते जदी सेंदी इंडस्ट्री थांदा बिच Sir, it is due to lack of skilled manpower. skilled manpower सर स्किल जदी माने एमती रे ओडिसा इंजीनियरिंग कॉलेज रो बहुत पास करके बैंगलोर चाकरी करन कि ओडिसा रे तो जदी सेंदी थांदा से माने एठी भी कर परंते तो स्किल मैनपावर एक्चुअली ऑप्शन जे सपोज पोस्को आसीतला व्हाई पोस्को लेफ्ट ओडिसा तो कोन पे गोटे हमें 40,000 करोड़ रो गोटे स्टील प्लांट इन्वेस्टमेंट करिया को आसीतला किंतु हमर लेफ्ट हेला कोन मेजर इश्यू हमर रहउची ना फास्ट हला हमर कोन ना क्लियरेंस इश्यू बहुत रहे एनवायरनमेंट क्लियरेंस इश्यू हला लैंड एक्विजिशन हमर हला लोकल प्रोटेस्ट हमर रहउची रेट एफिजिम हमर रहउची तापरे तो डेफिनेटली यही सब गुड़ाक आम प्रोब्लेम रोचे ग्राउंड लेवल आम रॉ मटेरियल प्रॉपर लाइन जदि आम मिलबनी सपोज आम गोटे रॉ मटेरियल एक्सट्राक्शन भी इश्यू जमीक आम कहीपर जे रिलेटेड टू नियमगिरी इश्यू जमी वेदांत को जो बक्साइड को कि आम एल्युमिनियम ये सब एक्सट्राक्शन बेले आम कौन है ना लोकल लोक प्रोटेस्ट कले तो रॉ मटेरियल जदि प्रॉपर आम आजिका डेट्रे देखुचे लॉट ऑफ आमर जो फुल कैपेसिटी जी फुल यूटिलाइजेशन होनी प्लांट गुड़ाक कहीं ना रॉ मटेरियल इश्यू आमर रोचे ओके तो रॉ मटेरियल इश्यू रहा लोकल आमर मैन पावर स्किल मैन पावर इश्यू रोचे कि लैंड एक्विजिशन आमर एनवायरनमेंट क्लियरेंस सो दीज आर सम ऑफ द की इश्यू जोड़ाक जो आमर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे we are not that much good in the ease of doing business that's what the investment is not coming to प्रॉपर ओडिशा और तुम कहीपर जो आप चैलेंजेस गुड़ा को आड्रेस करने गवर्नमेंट कौन करें तो ये चैलेंजेस गुड़ा को आड्रेस करने एनी स्टेप्स जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं सॉरी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं जो गुड़ाक आम ये चैलेंज को इश्यू करने आम कौन कौन आउ बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करुच्ची फॉर ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओडिशा रे तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा कौन कौन स्टेप्स नहीं एनी आइडिया सर जो दुबई रे इन्वेस्टर मीट हमें कॉल करियो इन्वेस्टर मीट तो हेची क्लियरेंस पई किछि हमरा एमदी पोर्टल करछि ई ब्लीच करी गोटे हमर पोर्टल करितिला जे ई ब्लीच रे कोन सिंगल विंडो क्लियरेंस हां सिंगल विंडो क्लियरेंस पे हमर करा जाय गो स्विफ्ट सर गो स्विफ्ट सिंगल विंडो क्लियरेंस हां ई ब्लीच आउ गो स्विफ्ट जो एटा गोटे हमर आउ कोन स्टेप्स नै छथि हमर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा recently IT policy has it has amended and there is a subsidy given for the land and other infrastructure state GST will be remission and if the solar energy will be promoted in case of particularly किछि लैंड को नै कि निज पाखे रखि जोटा कि लैंड बैंक कांसेप्ट अछि जो yes idco is doing sir land bank concept so that जदि कि आसुची हमको हमें कोन करबा ना जेमति कि पोस्को केस रेला दे आर not माने land acquisition they have facing the problem and protest from the local people in that case if government has the land immediately they can give the land and the clearance then definitely it is easy for them to start the the operation and all infrastructure setup and then operation so land acquisition is a problem yes yeah Himadri another thing we can हाँ सिद्धार्थ को तापरे देबी sir we can quote recent Mahanadi water crisis because Mahanadi is the lifeline of Odisha and maximum industries are completely dependent on that and when the water scarcity is going on so there will be lack of industry
there is a lack of promotion of industry will be coming, because if water is not there, so there will be hampering of the production of any like aluminium or iron kind of like industry. So that is also another problem. Okay. Sir, 100% FDI mining through automated route. Okay, 100% FDI. Okay. Then our district mineral foundation जोड़ा बना है जो Okay. compensation for mining affected region पे. Then हमारा mineral statistics हमारा उड़ा करा है जो माने real time basis रे जहाँ भी production dispatch हो जे से उड़ा को recorded करा होगा. ଆଉ ତମର ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଜୋନ୍ ଆମର କରାଯାଇଛି ଯେମିତି କଳିଙ୍ଗ ନଗର ହେଲା, ସୋ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସୋ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଜୋନ୍ ହେଇଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କରିଡର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କରିଡର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଲେସ୍. ଆମେ କହିବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ରିବେଟ୍ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ବୁଷ୍ଟ ଦ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସେଇଟାକୁ ତମେ ଗୋଟେ କହିପାରିବ. ଜୟଶ୍ରୀ କୁହ. Sir, Vision 2025 80, so for industrial development, sir. Okay. Sir, to attract new investment and create employment generation. Okay. तो आगो इश्यू हाँ देवी को. Sir, due to this policy, there is a significant improvement in ease of doing business of Odisha from last year 29 to this year 6. So it's a great achievement for Odisha, and Mission Purvodaya can play a major role in industrial development. Mission Purvodaya you can माने major steel hub हमारा करा जाऊँची ओडिशा को. Yes, Mission Purvodaya तो मैं Sir, बिजू एक्सप्रेस हुए हम जोड़ा बना होची. सेड़ा वेस्टर्न ओडिशा रा डेवलपमेंट टाइम सेड़ा it will be helpful. Okay, बिजू. majorly the mining region. Okay. ओके तापर हमर कोन ना आमे जेमति कि एबे कहू जे कि इन्वेस्ट इन ओडिशा हमर कॉन्क्लेव हो जे डिफरेंट जगह रे वी आर शोकेसिंग व्हाट आर द फैसिलिटीज वी आर प्रोवाइडिंग फॉर सक्सेसफुल क्रिएटिंग और ईज ऑफ हमर डूइंग बिजनेस इन ओडिशा पई कोन कोन हमर फैसिलिटीज अछि. हम जेमति कहि पले लैंड बैंक हला कि हमर इजी एनवायरनमेंट क्लियरेंस हला किबा हमर गवर्नमेंट तरफरु सिंगल विंडो क्लियरेंस पई हमर दिया जाउची माने हासेल फ्री हमारा वेबसाइट क्रिया जे गो ई ब्लीज और गो स्विफ्ट एमती आमर करा जायछि. तो से गुडा हमर कोहा जीवो जे हमर मेजर आउ तापर हमर कहबा जे हमर रॉ मटेरियल जेहेतु हमर गोटे मेजर माने मिनरल बेल्ट इन ओडिशा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेनी मिनरल्स. तो प्रॉपर रॉ मटेरियल्स मानू प्रोवाइड करा होछि. कनेक्टिविटी टू पोर्ट कनेक्टिविटी हमर जो धामरा हो कि यापाई हो तो पोर्ट कनेक्टिविटी हमर करा जायछि. एंड एक्सप्रेस बिजू एक्सप्रेस हाईवेज हमर जो बिजू एक्सप्रेस हमर फॉर हमर रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट पे भी हमर प्रोवाइड करा जायछि. तो एई सब पॉइंट्स गुडा हम करि परे. हां को सर आ गोटे मेजर गोटे कॉज हैला कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ओडिसा रे एते सब डिस्ट्रिक्ट को कनेक्टिविटी नाही, सच एज द वेस्टर्न ओडिशा. यू कैन गिव द एग्जांपल. So recently, like government is trying to boost all these things, but previously, for like other industry and minerals are there, but due to the lack of like connectivity, industries are not interested to invest. Okay. ओके तो आउ कौन कौन हमरो एथरे मु ऑलरेडी शेयर कर देछि से जो वे रे. ओके जो जोडा मेजर स्कीम हमरो ओके तो ताकू मु ऑलरेडी शेयर कर देछि. ओके जस्ट मु एथरू डायरेक्टली कहूँ. ओके तो तापर हमरो सुवर्णरेखा और देव जलसेचन प्रकल्प उद्घाटित आम कहले ऑलरेडी मयूरभंज रे हमर एटा आसी एबे रिसेंटली इनागुरेट हेछि. तो को रिवर रे जदी पचारिबे बेसिक क्वेश्चन त मन रखतो सुवर्णरेखा और देव. नेक्स्ट होछि हमरो ओके वर्षा जल संचयन पे हमरो छात योजना आरंभ होइछि. तो राज्य रे हमरो स्टेट रे हमरो 52 ब्लॉक आउ 22 सिटी रे ए योजना हबो. पर्टिकुलरली हमरो स्टोरेज कैपेसिटी रखा जिवो छात ऊपर टू स्टोर द रेन वाटर एंड टू ग्राउंड द टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर. तो सेथि पे हमरो नेक्स्ट 5 इयर्स रे 20,500 माने पर्सनल माने प्रति माने घरे हमर करा जिवो. एंड माने प्राइवेट हाउस रे 1925 सरकारी कोठा ऊपर हमरो
यही छात योजना करा जो वाटर को स्टोरेज करके आम कौन करवा ना डिफरेंट ताकू रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करवा। ओके तो आम जमी आज डिस्कसन करूँ जे ई जब आमर यहाँ आमर जमी कहवा जे आम एग्जांपल दे परिबा कि आगु आमर 29 पोजिशन रे थिले बर्तमान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रे ओडिशा आमर कौन होची ना 6th रे अछि। सो प्लेस्ड अमंग 6 achiever state along with the industrially developed state. So as per the department of आमर जो इन्वेस्टमेंट आम कहे। ओके सो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 असेसमेंट रिपोर्ट अनुसार मूव फ्रॉम 29 टू आमर 6 पोजिशन जोटा कि आमर गोटे ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया सॉरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर ओडिशा इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो डेफिनेटली मोर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली विल कम टू ओडिशा। ओके तो यहाँ आम गोटे मन रखि ଏବେ रिसेंटली तुम कौटी ना कौटी कोट कर कौन कौन आमर तो स्टेप्स नहीं तो ओडिशा एते उपरकू उठी। तो बजेट रो देखिबो जे हमरो एग्रीकल्चर आमर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पाई ओडिशा रे कौन कौन सब स्टेप्स ने एबे जदि आमे देखिबा एई 2022 रो ओडिशा बजेट रिपोर्ट रे अराउंड आमर 21,166 crore आमर allocation टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो पर्टिकुलरली एथिरो आमर कालिया योजना को 1,08,74 crore एंड अदर जो आमर रहिला जेमति कि फार्मर मान को जो लोन दिया जाउची तो लोन रे आमर रिवेट करा जायछि जो इंटरेस्ट को 907 crore रुपीज रे आमर रिवेट करा जायछि। ओके तो आमर जो मंडी पाई आमर शस्य उत्पादन परिचालन पाई भी आमर 688 कोटी आमर है। ओके सो कालिया योजना डेफिनेटली आमर कालिया बलराम योजना लास्ट टाइम भी पचरा है। सो फटाफट तुम कालिया बलराम योजना जो मोस्ट इम्पोर्टाट पॉइंट जो थिला की फीचर्स माने तो कौन कौन तो केते आमर कालिया योजना रे केते अमाउंट प्रोवाइड करा जाउची आ केतेटा इंस्टॉलमेंट रे दिया जिवो आ को मान को कालिया योजना दिया जिवो कि समस्त को आमर सबु एग्रीकल्चर जो फार्मर अछन समस्त को दिया जिवो ना एमती किछि क्राइटेरिया रखा जाए को माने पाइबे आ केते अमाउंट पाइबे आ केतेटा इंस्टॉलमेंट रे पाइबे। जयश्री को सर कालिया योजना स्टैंड फॉर कृषक असिस्टेंट फॉर livelihood and income augmentation. Sir, it is a scheme which is launched by the state government of Odisha for the welfare of the farmers. So mainly this scheme has been implemented for the upliftment of the poor farmer. The poor farmer, the eligibility criteria would be the small and marginal farmers and the farmers who are landless. And sir, you can say that the farmers who are doing labor in some other land, labor activities. Okay. So sir, basically they 10,000 they will get, but sir in 5,000 two times they will get. Okay. Each family will get, sir. For Rabi and Kharif season. Okay. And this will be given in 5 cropping season between 2018-19 to 21-22. Okay. Sir. And there are many loans will be also be provided to them. Okay. Around 50,000 loan will be provided. That will be interest free. Now it is increased to 1 lakh. Okay. So what is the basic difference between PM Kisan Yojana and Kaliya Yojana? Sir, in PM Kisan, landless farmers are not included, but in Kaliya and Bolia, like landless farmers are included, right? Sir, I think in Bolia, landless farmers are eligible. Little bit. What is the major difference? पीएम किसान टा खाली
related to agriculture. But କାଳିଆଟା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ୍ସ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସିପିଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି applicable। ओके तो काल जो कि पीएम किसान रे केते टका दिया जाउची 6000 6000 yes। केतेटा इंस्टॉलमेंट रे 3 दुईटा installment 3 3 और 2 Sir, 2 to 3 installments. ओके 2 to 3 इंस्टॉलमेंट रे एठी हमर 5 दीटा इंस्टॉलमेंट दिया अछि। ओके तो हमर जदि हमें कहूचे जे फार्मर इनकम को डबल करिवार अछि 2022 रे और एग्रीकल्चर रो हमें मोर फोकस करा होची डेवलपमेंट पई एंड फार्मर इनकम को डबल करिया पई 2022 एंड फॉर दैट वन हमारा कमिशन भी बसला अशोक दलवाई कमिटी टू इंक्रीज द फार्मर इनकम बाय 2022। सो व्हाट आर द स्टेप्स एक्चुअली टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड फॉर इंक्रीज द फार्मर इनकम तो कौन कौन हमारा स्टेप्स निया जाय छै? So for drop more crops, कृषि सिंचाई योजना and कुसुम योजना। ओके तो फास्ट हमें कहि परिबो जे हमरा कृषि सिंचाई योजना रे हमरा कोन ना एस्योर्ड इरिगेशन प्रोवाइड करा जाउची सो फॉर ड्रॉप मोर क्रॉप विथ द थीम देन हमरा प्रथमे तमे स्टार्ट करिवो कि एग्रीकल्चर आगा हमें जदि देखिबा इरिगेशन फैसिलिटीज गला फॉर हमरा फर्टिलाइजर पई कोन करा जायछि ना सॉइल हेल्थ कार्ड हमरा दिया जाउछि तो अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट वी आर टेकिंग फास्ट वी आर टेस्टिंग द सॉइल सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी आर यूजिंग द फर्टिलाइजर सो ओवर फर्टिलाइजेशन हमें करूने सॉइल हेल्थ कार्ड करा जायछि सो ड्यूरिंग हमरा आफ्टर भी हार्वेस्टिंग पर हमरा कोन करा जाउछि फसल बीमा योजना करा जायछि सो दैट कि हमें देखिबा जे कोन करा जाउछि ना इफ देयर इज सम नेचुरल जदि डिजास्टर हला कि कैलामिटीज हला तो डेफिनेटली हमर कोन होछि ना तो गवर्नमेंट हमर कोन कराउछि ना इंश्योरेंस प्रोवाइड करा होछि तो डिस्ट्रॉय जदि हमर किछि एग्रीकल्चर को नेकी जदि हेछि सपोज बन्या बात्या कि किछि गला सपोज एबे सपोज हेछि तो सेही केस रे हमर कोन ना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे हमर तांको इंश्योरेंस प्रोवाइड करा होछि तापर हमर कोल्ड स्टोरेज सप्लाई चेन कोल्ड स्टोरेज रे हमर डेवलपमेंट करा जाउछि आ तापर हमें देखिबा जे जेमति कि हमर कोन होछि हां नीम कोटेड यूरिया तो हमर हे गला। ओके सो एनी अदर पॉइंट हमें जदि देखिबा आ कोन पॉइंट हमर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमें कहिबा जे 1.5 टाइम्स हमर एमएसपी करा जायछि तो जेति कि हमर त हमर खर्च होछि प्रोडक्शन रे तो तार 1.5 टाइम्स हमें प्रोवाइड करूचे सो एमएसपी गोटे हेगला 1.5 टाइम्स तो हमें कृषि सिंचाई योजना हेगला किंबा हमरो हमें कहि परिबा सॉइल हेल्थ कार्ड की पीएम जो फसल बीमा योजना एबे हमें तो पीएम किसान योजना भी कहि परिबा जो थ्री के हमरो 6000 हमरो दिया जाउची मार्जिनल और स्मॉल फार्मर माने को फाइनेंशियल हेल्प दिया जाउची। ओके तो ए सब गुडा का हमें कोन कहि परिबा ना टू इंक्रीज द फार्मर इनकम और डबल द फार्मर इनकम बाय 2022। ओके हाँ वेरी गुड आउ गोटे पॉइंट हमर हला ई नाम तो जो टोटल हमर जो एग्रीकल्चर जो मंडी गुडा रहला ताको कनेक्टेड करा होछि थ्रू आउट इंडिया रे। ओके सो दैट कि जो हमारा जो प्रोडक्शन होछि दे कैन द फार्मर कैन सेल देयर प्रोड्यूस वेयर दे कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट जो टू पाई परिबे तो सेटी पे हमें करि परिबा। ओके जो एपीएमसी हला कि ई नाम हला सेटा भी हमें कहि परिबा लोन भी दिया जाउछि प्रोवाइड करा जाउछि लोन भी हमारा दिया जाउछि एंड अदर जो टेक्नोलॉजी तमे इक्विपमेंट किनिया पे भी हमारा नेसेसरी लोन भी प्रोवाइड करा होछि। आ कोन पॉइंट्स तमे कहि चलो सर वेयर हाउस रिसिप्ट जोठो से माने लोन नहीं परिबे हां वेयर हाउस आउ तापर कोल्ड चेन हमें कहले जे तमरो आफ्टर हमरा सपोज प्रोडक्शन पर सपोज वन टाइम रे हमरा हेवी टोमेटो प्रोडक्शन हला तो से माने कोन करि परिबे ना टोमेटो को जेतोला हमें लोअर रेट रे हमर बिकी अपेक्षा दे कैन स्टोर इन द हमरा लॉस रे बिकी अपेक्षा दे कैन स्टोर इन द कोल्ड स्टोरेज एंड आफ्टर दैट जेतोले से माने बिकी परिबे। ओके आउट हमर हाँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होची कृषि विज्ञान केंद्र होची वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ओके वेरी गुड आउ कोन हमर होची सर ये दी दिन तले सर है वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम जो each state are like lacking the fertilizers so now central will conduct like the fertilization distribution. Okay
ओके तो एगुड़ाक माने आम कहीपर ओके हाँ तो आलाइड सेक्टर रे भी आम करुचे तो खाली आम कृषि नुहे आलाइड सेक्टर रे करुचे जमती आम कहवा एनिमल हजबेंड्री है बी कल्चर बी है कि फिश एक्वा कल्चर है आप हॉर्टिकल्चर हाँ लाइफ स्टॉक मिशन टू इनक्रीज द सब्सिडियरी इनकम वेरी गुड आउ कौन आमर हो तो यहाँ डेफिनेटली जब पचारि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कौन कौन आमर हो पारुची और गवर्नमेंट कौन कौन स्टेप्स नौ तो सहीटा आम डेफिनेटली कहीपर पॉइंट गुड़ा ओके सर गोटे क्वेश्चन पचारि जेन्युइन आंसर सर देबे एग्रीकल्चर गोटे सब माने गोटे एमिति गोटे हब गवर्नमेंट सब बजेट भी एलोकेशन अधिक करूची एवं प्रति इलेक्शन पूर्व किसी किसी स्कीम डिक्लेयर होची स्टिल एग्रीकल्चर एक्चुअली इंप्रूवमेंट हे परने फार्मर क्राइसिस एंड अछि फार्मर सुसाइड होची सर गोटे सर माने भलो आंसर कोन माने हमें एतकी जिंस कहि दउ कहिया पे कहि परियो ए गोटे जेन्युइन आंसर गोटे सर कोन माने काहे कि एग्रीकल्चर एते पछरे अछि एते तो स्कीम होची सर एते इनाम होची बहुत जिंस थाउजेंड समथिंग अछि एवं सेटा लास्ट तळाडू 3 कि 4 रे आसुछि हाँ को जाय श्री को Sir, I think this is a lack of awareness among the farmers. More awareness should be done by the administrators, so that the farmer can be more aware. And secondly, I think it's a technological advancement in the farming sector. Because farmers are not they are not literate, so I think they should be given some kind of training so that they can improve their methods of agriculture practices. Okay, so sir, these are the few points. Tanmita ko Sir, first thing is over dependence on climate. We are very dependent on rainfall. That's why किसी भी यदि एपट सेपट हो जाउची rainfall का बेसी flood हो जाउची तो it ends up destroying the crops in no time. After second which is landless, most of the farmers are still landless. That is also one thing, or very less amount of land they have for cultivation. The ownership is very low. Third would be alternate जो diversification of crop which is that maybe it is not trustworthy because most of them are still cultivating wheat or paddy and alternate hey पारिले भी सेमान को technique मिलुनी सेमान को technique मिलले seed कोठु आनिबे कौन करिवे से जिनसटा ground level implementation is very low yet and awareness is जिनसटा बिल्कुल भी नहीं तो इसमें diversification भी hey पारु is that a major okay very and good backward and forward linkages are also there cold storage जैसे कि बहुत कम number of cold storage उपलब्ध है बिल्कुल नहीं नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिकली माने रेलवेज रोडवेज कनेक्शन या वेरी गुड तो माने टोटल भगवान के ऊपर सब डिपेंड करछे फास्ट मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट थिंग है जे इंडियन एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड अपन हमर जदि देखिबा रेनफेड ऊपर हम डिपेंड करछे मानसून ऊपर एंड मानसून इज वेरी हाईली हमर हमें कहबा अनसर्टन तो को वर्ष जदि हमें बिल्कुल वर्षा न होला फ्लड हमें ड्रॉट रे गला को वर्ष बेसी वर्षा गला बन्या रे पळेला तो आमर टोटली इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड अपन द मानसून जदि हमर गोटे बैलेंस होगी रहिबो ही एग्रीकल्चर हम तो आम जिते स्कीम जहाँ भी करदे तो जो प्रोडक्शन आम जिते आम एरिया आम फ्लड होती तो कौन आम एग्रीकल्चर तुम कह डिपेंड कर गवर्नमेंट उपर किसी डिपेंड करनी आउे करें जब फ्लड सिचुएसन को कंट्रोल करने गोटे परमानेंट सिचुएसन परमानेंट आम किसी फिक्स करने हेवी इन्वेस्टमेंट दरकार तो सहीटा को बर्तमान आम से ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने भी गवर्नमेंट पाखे गोटे परमानेंट सल्यूशन काढ़ापी भी आप कौन ना ह्यूज इन्वेस्टमेंट दरकार तापर आम कहले जमती कि जो अवेयरनेस
बहुत एग्रीकल्चर माने आम देखा रूराल एरिया रोचे दे डोंट अवेयर अबाउट द प्रोग्राम कि आम गोटे सॉइल हेल्थ कार्ड करके फर्टिलाइजर यूज करार अच्छी कि मेकानाइजेशन वे रे करार अच्छी आम स्टिल वी आर गोइंग थ्रू द ट्रेडिशनल प्रोसेस रे आम जाऊे से जो हल लंगल आम चाष करुचे स्टिल आम माने मॉडर्न इक्विपमेंट आमर यूटिलाइज करूने ता छड़ा आम जदि देखा जे स्मॉल फार्म्स जो लैंड होल्डिंग बाय द फार्मर आमर छोट छोट आमर जो रही जाऊँगी ड्यू टू डिवाइड गोटे फैमिली आमर 5 भाई रही तो गोटे डिवाइड करदे आमर स्मॉल आमर जो एरिया रोचे दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम तो भर तुम कौन कर ओके तो मेनी प्रॉब्लम रोचे मोस्ट इम्पोर्टाट थिंग हूँ जो अवेयरनेस तापर आमर प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम रोनी तो मुझे गोटे क्लासिक एग्जांपल तुमको कहूँ ओके जोटा रोज मुझे रियल फील करी तो आमर कौन होना एग्रीकल्चर सपोज मंडी की जाऊँगी मंडी को आमर कौन करूँ जो मैंने मंडी रोचे से आग नहीं जाऊँ जो मैंने फार्मर दौरान से सिग्नेचर नहीं जाऊँ पर से कौन करूँ ना तुम ना तो जी जो डीलर को दौरान आमर माने ना रे माने कौन करूँ जोड़ा बाहर किणुंट 1200 टकर धान से बिकी दौरान कौन ना 1800-1900 टकर से माने जो गवर्नमेंट ठू नौ बाहर 1200 टकर से लोक कि कारण एम कहे आम तो मंडी को दे पारे से जी इंचार्ज अच्छी सी कौन कौन ना नाई आसनी किंतु रियली से ना पकईक रखुच करप्शन भी होची आमर कौन होची ना प्रॉपर जो बेनिफिटा पाइबा कथा सेटा पाई पारनी आ पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर आम प्रोडक्शन करूचे तो प्रॉपर आमर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जमी कहले आमर टमाटो थर जड़े नहीं गला देखला जे आउ तो बिक्री हेनी एत समय तो सी भी आम कोल्ड स्टोरेज नहीं कि आम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को दे पारे सी कौन कर लॉस भी आम करुच्ची तो डेफिनेटली तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मुझे कहबी लैक ऑफ अवेयरनेस प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आउ मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम ये सब हो पारुनी से जहाँ कले भी ग्राउंड लेवल जब इम्प्लीमेंटेशन न हो देन डेफिनेटली एग्रीकल्चर सेक्टर एंड हाईली डिपेंड अपन जो मानसून तो डेफिनेटली ये सब कज जो आम जहाँ भी कले इट इज आमर गोटे कोऑर्डिनेशन निहाती रहा दरकार जो आमर ये सब चैलेंज जो सम किंतु आम कहबानी जे एमती होनी तो लैक ऑफ माने जहाँ भी आगुरी थिला डेफिनेटली डेवलपमेंट होईची किंतु जेहेतु आमर मेनी स्टॉक होल्डर ये इनवॉल्व रोचे से आमर एटा टोटाल अनसर्टेनिटी रोचे ओके यस तो आम आज क्लोज करवा टोटाल नेक्स्ट क्लास आम डिपेंड माने मु चाहूँगी एक्चुअली एमती पॉइंट्स जोड़ा कि मुझे जी आम इफेक्टिव डिस्कसन कले मो थे मेनी पॉइंट समस्त पाखु किसी ना कि गोल्डन पॉइंट था जोटा कि रिकॉर्डिंग सेशन आउ थे देखी नब जो मैंने देखी न तो से मेनी पॉइंट्स तुम पाइपर जोटा कि नोट करके रख आउ एन पॉइंट तुम जब कह एति भी आम इंटरव्यू सेशन में पाखे भी एति पॉइंट न कि गोटे पिला एत डाइभर्स पॉइंट से कहूँ तो डेफिनेटली यहाँ गोटे माने मो मत गोटे समस्त किसी पॉइंट जोटा कि फ्रुटफुल रम फाइनाल जो तुम तुमर मास्टर पॉइंट रख इंटरव्यू पैनल आगे तो डेफिनेटली गोटे पॉजिटिव इम्पैक्ट पकेब ओके आम मोर टॉपिक डिस्कशन करवा नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू आम नेक्स्ट क्लास रे रेस्ट ऑफ द टॉपिक डिस्कशन करवा सर आपण रिकॉर्डिंग गुडा अपलोड करूछंती कि सर हां अपलोड करूची आ ग्रुप रे भी देइची तो जेति के हमरा होची सब गुडा कर रिकॉर्डिंग हमरा होची ओके सर थैंक यू सर ट्विटर पेज देखो जो मैंने जॉइन करी न ओके हमर ए जो कलिंगा आईएएस इंटरव्यू को जोटा कि हमर हेची एथिरे हमर टेलीग्राम रे डेफिनेटली एथिरे जॉइन करो समस्त कारण एथिरे सब मटेरियल गुडा को कारण जो हमर टेलीग्राम से लिंक टा कोनटा की हमें तो सब व्हाट्सएप रे अछि हां टेलीग्राम एथिरे मु सेति में कहिथिल ना सब तक हमर ए गोटे हमर टेलीग्राम चैनल रे हमें रहिबा कारण व्हाट्सएप रे रहिले पुणी प्रॉब्लम कार प्राइवेसी इश्यू होची एथे जो माने किए भी जॉइन करि परिबो तो एथिरे हमें पर्टिकुलरली सेति पय हमें एथिरे जो माने रहिबे केवल इंटरव्यू कैंडिडेट रहिबे जो माने मेन लेखि छंती तो सेति पय हमें एडमिट कार्ड नोचु सेति पय हम गोटे गूगल फॉर्म दिया छि फिल अप करिया पय करि के एथिरे जॉइन करिवे सो दैट कि हमें जानिबा जे एतिक पिला रहिले ऑथेंटिक जो माने कि लेखु छंती आ डेफिनेटली एथरो हमरो मेन रिजल्ट आसला पर भी हमें इंटरव्यू माने पय प्रॉपर वे रे करिवे सर ओके सर मो सही एनरोल करथिली सर सेते एक्चुअली मते मैसेज कर दियो मु आगे थैंक यू एवरीवन थैंक यू सर या थैंक यू